A cheerful good morning to one and all present here today in the science class. I once again welcome you back on behalf of Sunbeam Academy. Before going ahead with today's class, I hope you all would have got your science paper not very easy, not very tough enough, and I hope you all are going to score very good marks. Let us just wait eagerly for the results to come, and at the same time, let us start our annual preparations as well. If you remember what we have done before the periodic test 2 or the unit test 2, so as per my knowledge, what I remember is that we have started with one of the new chapters of your annual syllabus, that was your changes in environment, and in this chapter we have already started and completed one or the two pages. Since we have to carry on with the revision as well, so we were not able to fully engage in the explanation of this chapter, so half of the class was given for the explanation of the chapter and half of the class was given for the revision of the chapters which are going to come in the periodic test 2. So let us start with our class today without any delay, as we still have one or two chapters left in our syllabus as we have done earlier. So today also, first and the foremost thing, we are going to start with our syllabus part. Let me show you the syllabus and thereafter we will be continuing ahead or going ahead. As you can see here, okay, here it is the syllabus for this, sorry, this one here. This is our annual syllabus which was there from October to November. Simple machines and air and water, these two were the chapters which has already come in your unit test 2, and now we have completed this rocks and minerals. We have completed this chapter as well, the sun, the earth and the moon as well, okay, and we have started with this chapter, that is changes in our environment. Not only we have started with this chapter, but we are still left behind with one more chapter, that is your natural disasters, and these three chapters, if you can see the syllabus here, sorry, these three chapters along with this rocks and minerals, okay, of the previous month, these four chapters are coming in your annual exams, that is rocks and minerals, the sun, the earth and the moon, changes in our environment and your natural disasters. So if you know, or I would like to remind you that please just go ahead once more, please cross verify it. We have completed all these three chapters, that is rocks and minerals, the sun, the earth and the moon, and we are on this chapter, that is your changes in our environment, okay. So as you can see, our note has also been given, that is only the diagrams of periodic test 2 will be included in the annual exam. This means that please don't throw your copies or just wind up your notes of the previous unit test 2, okay, because the diagrams will be asked from them. So please keep it safely so that you are able to revise it, or even you can revise it from the books as well, not at all issue in that, okay. Let us start with this. Let me first show you the glimpse, or let me first show you what we have done in the last class. So as per my knowledge, we have here, okay, module 2, module 3, okay, this was the module of changes in our environment which was done on 30th of December 2020, okay. If you can see, this was the chapter, and global here we have completed, that is your carbon dioxide. Next important gas पे carbon dioxide. So till here we have already completed, and we are going to go ahead with this part. So this I have shown you the glimpse. Now let us go ahead with the today's session or today's class. This was the chapter, okay. This is the book PDF which is going to be uploaded today. No need to worry regarding that, okay. So this was the chapter, and I hope till here we have completed, that is the plants use a lot of carbon dioxide for photosynthesis, and that is why we are little bit safe enough. Otherwise the destructive effect of this carbon dioxide would have caused much more damage as compared to now, okay. Starting with this, okay, here at, okay, we are going to start from here. Let us go ahead with this once more. That is when, okay, first let me revise this, since it has been long back, that is around 10 days has been passed. We have not, you all would have not gone through this chapter. If you would have gone through, well and good. If not, no problem, okay.
So in this chapter we are basically dealing with all the changes which are taking place in our environment, either due to human or some other activities. And what are the things which we are going to learn? That is, what is the impact of humans on environment. These are the two impacts basically, your greenhouse effect and global warming, and how we can protect the environment. All right, the screen has been shared. Okay, so which activities do you think harm the environment? This we have already done. All the living and non-living things, if you remember, I told you that all the living things, they are known as the biotic components, whereas the non-living things, they are known as the abiotic components. So soil, air, water, plants, animals, and everything, they are a part of our environment. How human activities and the environment, that is both of them, they are correlated to each other. And basically environment is not degrading the human activities, but in return human activities are degrading our environment, including you and me as well. Okay, हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग भी बराबर के हिस्सेदार हैं अपने environment को damage पहुंचाने में. If you can see, the building of houses, it is creating a lot of pressure on the surface of the earth, and the vegetation has also been removed. Okay, the air pollution which is caused by the smokes which are generated either from the vehicles, factories, or anything else, that is burning up of fossil fuels or anything. Next is the water pollution, that is discharging of sewage or waste materials into the main water stream or the water bodies. When we are talking about the factories and vehicles, they release harmful gases into the atmosphere. Factories also release harmful waste into rivers, lakes, and seas. The addition of harmful substances causes pollution of air. Okay, this we have discussed. Greenhouse effect, I have told you with the help of a diagram as well, how our atmosphere is acting like a one-way service in which the heat from the sun is able to reach to the surface of the earth, but it is not able to go back into the space, and that is why the environment is getting warmer and warmer. Okay, moving ahead with this, what is the effect of this carbon dioxide? Okay, so burning of fuels. Okay, now this carbon dioxide, water vapor, all of them, they are responsible for causing the greenhouse effect, and they are the greenhouse gases also, along with your methane, ozone, nitrous oxide as well. Okay, carbon dioxide, though it is responsible for greenhouse effect, but we also know that the same this carbon dioxide is also being utilized up by the plants for making up their food, and if plants will not get carbon dioxide, food नहीं बनेगा तो हम लोग को खाना नहीं मिलेगा. Okay, let us go ahead with the last part. So since plants are using a lot of carbon dioxide for photosynthesis, यहाँ पे जब photosynthesis की बात आई है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहूँगा. यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है. ठीक है, बेसिकली whenever we are talking about photosynthesis, so होता क्या है, wait, not here. Okay, so we have here two things are there, that is here water plus carbon dioxide, and then we need an arrow here. Okay, or we can just reduce the size of this. Okay, the water plus carbon dioxide. Okay, this water and carbon dioxide, they combine together. Okay, and apart from this, they use sunlight and chlorophyll. Okay, these are the two things
Okay, so these are the two things, that is your, apart from your sunlight and chlorophyll, we have here, okay, both these things. Okay, these two things, sunlight and chlorophyll, they combine together along with water and carbon dioxide, and they give your this part, that is your glucose and plus oxygen. Okay, these things, they combine together to form, okay, so this is the complete equation of photosynthesis, that is water and carbon dioxide. Water is provided to the plants from the roots, carbon dioxide is taken up by the plants from the atmosphere, sunlight is already falling on them from the sun, chlorophyll is also present inside the plants only, and in return they form glucose plus oxygen, and this glucose is nothing but glucose is the food which is prepared by the plant here. Okay, so glucose is the food which is prepared by the plants here. So this food is what plants consume, and at the same time majority of the food is consumed by the human beings and animals which are present on the surface of the earth, and very little amount of this food is utilized by the plants. तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका फोटोसिंथेसिस है. क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सब कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आपको भी पता है, ऑक्सीजन इज अ लाइफ सस्टेनिंग गैस, वेयर एज ग्लूकोज इज द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, एंड इन रिटर्न इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड by the animals only, animals including human beings which are present on the surface of the earth. Now the destruction of rainforest in the last few decades is also responsible for the increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. As a result, more heat is getting trapped in the atmosphere. अब क्या है, कुछ सालों पहले, ठीक है, 10 साल 20 साल या 40 साल, इन पिछले सालों में क्या हुआ है कि मोर एंड मोर रेन फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो रेन फॉरेस्ट क्या है, जनरली फॉरेस्ट एरियाज विच आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड आइदर फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस और फॉर the purpose due to forest fires or anything like that, whatever may be the reason for the destruction. But since the rainforest they are getting destroyed, as a result of which the amount of carbon dioxide is increasing, and at the same time this increased amount of carbon dioxide is resulting in more trapping up of the heat in the atmosphere. When we are moving ahead with the fact file, so we have here, that is human activities are releasing carbon dioxide into the atmosphere at a much faster rate than plants and oceans can absorb it. अब यहाँ पे देखिए एक और नई चीज आपको पता चली कि प्लांट्स तो एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट लेकिन ओशंस भी एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, that is carbon dioxide is soluble in water as well. ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि soluble and insoluble substances, तो उसमें आप याद रख लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो soluble in water. इसी पे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि all of you are very much familiar with the cold drinks or the soft drinks which you drink now and then in your daily life routine. So whenever you are opening the cap or the lid of that bottle, you observe a kind of effervescence is there. ठीक है, so that effervescence is nothing but the effervescence of carbon dioxide is there, and at the same time when you drink it, the sour taste or whatever is there, that is just because of the carbon dioxide which is present in that liquid. Okay, so carbon dioxide is soluble in water. ये भी याद रखिएगा. जैसे आप लोगों ने solid liquid चीजें पढ़ी हैं, जैसे लेमन हुआ, लेमोनेड, that is soluble in water, sugar and salt they are soluble in water. अब गैस is soluble in water,
तो here we have the example of your carbon dioxide. Okay, moving ahead with this, so we have here that is water vapor. When we are talking about the water vapor, so it is the largest contributor to the greenhouse effect. The sun's heat causes water from the earth's surface to evaporate. This adds water vapor to the atmosphere continuously. Okay, अब देखिए ये सारे रीजंस तो हैं ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही कर रहे हैं. ओके, सो नॉट ओनली दिस कार्बन डाइऑक्साइड बट द मेजर गैस विच इज योर वाटर वेपर. वाटर वेपर क्या है? गैशियस फॉर्म्स ऑफ वाटर है. दूसरी चीज आप एक चीज और समझने की कोशिश करिए कि एज ऑल ऑफ अस वी नो दैट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. अंडरग्राउंड वाटर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब अर्थ का 70% मतलब मोर देन 50% इज कवर्ड विथ वाटर. एंड वेन एवर दैट सनलाइट इज फॉलिंग ऑन दैट सरफेस ऑफ द वाटर, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, इंटेंस हीट ऑफ द सन, the water is getting evaporated and continuously forming the water vapor, which in turn is trapping up or absorbing the heat of the surroundings. अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा अपने कॉमन लाइफ एग्जांपल से कि कैसे ये चीज़ हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है, ठीक है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रीन हाउस इफेक्ट एज वेल. ओके, अब इसमें क्या है, हीट कैसे एब्जॉर्ब हो रही है? जब भी आपको किसी चीज़ को ठंडा करना रहता है तो आप क्या करते हो? पानी डालते हो. क्यों पानी डालते हैं? क्योंकि पानी क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि जैसे ही वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये वाटर वेपर क्या करेगा? और हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम के फॉर्म में या और किसी फॉर्म में ऊपर और बढ़ जाएगा. और एटमॉस्फेयर की द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ओके, इफ यू गो हेड, so water vapor, then we have the methane here. Okay, methane is added to the atmosphere mostly by coal, petroleum and natural gas industries, animal farming, decay and decomposition of waste and wetlands. The percentage of methane in the atmosphere has been increasing over the years. Wetlands are your lands which are covered with shallow water. Shallow water मतलब बहुत गहरा पानी नहीं है, ठीक है, थोड़े से पानी से क्या है? कवर्ड है, इसीलिए उसको वेटलैंड्स बोलते हैं. नाउ मीथेन, मीथेन का देखिए जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है, ठीक है. मीथेन, मीथेन इज अ गैस बेसिकली, ठीक है, CH4, और इस 4 को हम यहाँ नीचे लिखते हैं बेसिकली, ठीक है. अब इसको कैसे लिखेंगे ये तो मुझे नहीं पता. कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, सॉरी, ये एकदम नीचे सबस्क्रिप्ट में होता है, जैसे सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट होता है, जैसे पावर लगा रहता है, तो यहाँ CH4 4 इसके नीचे लगा हुआ रहता है. सो दैट इज वाई CH4 इज नथिंग बट दिस इज योर फॉर्मूला और द सिंबल ऑफ योर मीथेन, फॉर्मूला फॉर मीथेन, एंड विच इज बेसिकली अ gas which is responsible for your greenhouse effect or for increasing the global warming. Okay, so in this way, if we go ahead, how it is generated? Methane is generally generated by whenever you are burning up the coal. जब भी हम कोल को जलाते हैं, कोयला जलाते हैं. Now remember, coal is of two types again: the coal which is formed by the wood and the coal which is formed by the stones here. Okay, नेक्स्ट वी हैव द पेट्रोलियम एज वेल. जब पेट्रोलियम की बात आती है तो यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएगी पेट्रोलियम में ही. मतलब पेट्रोलियम से जितने भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, अराउंड 300 to 500 और इवन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम. तो जब भी हम कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाएंगे तो वी आर गोइंग टू गेट मीथेन हियर. ओके, और बेसिक प्रोड्यूसर आप भी जान रहे हो कि पेट्रोल एंड द डीजल. ओके, and natural gas when we are talking about, so natural gas industries generally आप भी जानते हो कि जितने भी vehicles हैं, चाहे फैक्ट्रीज हैं, जब भी उसमें क्या रहता है, फॉसिल फ्यूल्स बर्न करेंगे तो नेचुरल गैस जब भी बर्न करेगी तो दैट इज गोइंग टू गिव यू मीथेन एज वेल. ओके, एनिमल फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग का मतलब है कि जब हम काउ डंग, ठीक है, काउ डंग या यूरिन ऑफ द एनिमल्स व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द काउ डंग्स and applied into the lands, agricultural lands, then also methane is decomposed and methane gas is liberated. Okay, decay and decomposition of waste.
गोबर गैस आप लोगों ने सुना है, ठीक है, इसका नाम ही ऐसा ही है कि गोबर गैस हम बोलते हैं। तो गोबर गैस इज व्हाट बेसिकली द इट इज अ काइंड ऑफ प्लांट ओनली, ओके, गैस प्लांट, जिसमें हम जितनी भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं सबको भर देते हैं और ऊपर से पैक कर देते हैं। तो जब बंद कर देते हैं तो हमारा ये मीथेन गैस बाहर निकलता है और उसको पाइप के थ्रू हम अपने बर्नर में लगा लेते हैं और एग्जैक्टली वो आपके बर्नर की तरह काम करता है। उसको गोबर गैस भी हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इफ यू गो अहेड विद दिस एंड वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स का मतलब वही है, क्योंकि डीकम्पोजिशन होता रहता है। जब कोई भी चीज़ पानी में बहुत ज़्यादा दिन तक पड़ी रहेगी तो डीकम्पोजिशन मतलब सड़ने लगेगा, टूटने लगेगा। द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। मीथेन का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हियर द ओजोन। ओजोन इज नेचुरली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, विच इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड योर एक्सोस, देन वी हैव troposphere, stratosphere, mesosphere and your exosphere. Okay, these are the 4 or 5, one एक और layer है, मुझे नहीं याद आ रहा है। Okay, however emissions, okay, that is from the vehicles, that is the gases which are coming out. Emissions का basically मतलब वही है कि substances और particles that are released or sent out, जो भी चीजें निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, from the vehicles and factories as well as burning plant matter also produce ozone in the troposphere. This ozone in the troposphere causes greenhouse effect. अब देखिए, ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फियर में है तो वो हमें बचा रहा है, लेकिन यही ओजोन अगर हमारा ट्रोपोस्फियर में जनरेट हो जाए तो ये क्या कॉज करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करेगा। ओके, नेचर है, हम कुछ कह नहीं सकते। ओके, बट ये थोड़ा सा आप लोग भी गूगल करिए, मैं भी इसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा कि ये सच है कि नहीं। Okay, because ozone is generally considered, not only considered to be a harmful, but it is considered a life saving gas as well. जैसे हमारा ऑक्सीजन लाइफ सस्टेनिंग गैस है, तो हमारा ओजोन लाइफ सेविंग गैस है, क्योंकि वही हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ओके, सो हियर ऑल दोज एमिशंस, व्हीकल से, फैक्ट्रीज से, या हम प्लांट मैटर कोई चीज जला रहे हैं, तो ये सब के सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओजोन प्रोड्यूस करते हैं। और ये ओजोन कहाँ प्रोड्यूस होता है, ट्रोपोस्फियर में प्रोड्यूस होता है। ये ओजोन जो ट्रोपोस्फियर में प्रोड्यूस होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, इफ वी गो अहेड विद दिस, द लास्ट पार्ट, दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 शायद फॉर्मूला होता है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, so when we are talking about the nitrous oxide here, so nitrous oxide is released into the atmosphere when fossil fuels and plants and animal matters are burnt. अभी यहाँ पे देखिए, आपने क्या देखा कि जब प्लांट्स को हम बर्न करते हैं तो ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा नहीं खाली एक ही गैस प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे आपको प्लांट्स को बर्न करेंगे या एनिमल के किसी भी पार्ट को बर्न करेंगे तो भी नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है। दिस इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, चाहे फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जब हम लोग पेट्रोल, डीजल, कोल कुछ भी जब बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, इन लोगों के साथ साथ आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस ऑल्सो प्रोड्यूसेस दिस गैस। हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस में, चाहे वो यूरिया है, पोटैश है, NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, कुछ भी हम यूज करते हैं, they are also producing this nitrous oxide gas. Okay, get it right here. The greenhouse effect is a natural process. It keeps the earth warm enough for us to live and grow food. However, excess of this effect due to human activities is bad for us. अब देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अर्थ को एक राइट टेम्परेचर पे रखता है, लेकिन जब इसका एक्सेसिव इफेक्ट हो जाता है ह्यूमंस की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, then it becomes bad for us, or it becomes detrimental for us, or it starts causing harm to us. Okay, next we have here is, that is your global warming. When we are talking about this global warming, अब ये क्या है, global मतलब पूरे वर्ल्ड में, warming आपको भी पता है, that is increase in the temperature due to any other reasons. Okay, so if we have here, that is, let us start with this.
First, let us see how much time is left. Okay, we have 2 to 3 minutes. So global warming जब पूरे के पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे, so that is basically known as your global warming. That is the greenhouse effect causes warming of the earth's atmosphere. Due to excess of greenhouse gases, the atmosphere traps and sends back more heat towards the earth. This may result in a rise in the temperature on the earth. This is called global warming. ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जब पूरे के पूरे अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगे या अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होने लगे, दैट इज नोन एज योर बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग. एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, जब ग्रीन हाउस गैसेस जितने भी आपने पढ़े, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट वन, ओके, वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन एंड योर नाइट्रस ऑक्साइड, जब इनका लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होने लगता है, जब ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होंगे तो ये हीट भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और हीट ज़्यादा देंगे, बाहर निकालेंगे एटमॉस्फेयर में. ओके, इसके वजह से क्या होगा, हमारा टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर रहेगा वो बढ़ता जाएगा, एंड दिस इज नोन एज योर ग्लोबल वार्मिंग. ओके, सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर विच इज कॉज्ड by the absorption of heat, absorption and release of heat by the greenhouse gases is known as your global warming. In the last 100 years, the average temperature of the earth has risen slightly. Scientists predict that it may rise further by the end of this century. The effect of this are already visible. कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया है और ये हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है. तभी आप देखते हो कि समर्स में टेम्परेचर्स 50 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, 51, 52 तक पहुंच जाता है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है. मतलब पानी रख दोगे वो एकदम से, मतलब उसमें से भाप निकलने लगेगा. दैट दिस इज व्हाट इज 50 डिग्री. ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, तो कुछ पास्ट 100 ईयर्स में जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है. साइंटिस्ट लोग ये प्रोडिक्ट करते हैं कि ठीक है, अभी ये इस सेंचुरी तक बढ़ेगा. इसका इफेक्ट हमें पहले से ही देखने को मिल रहा है. क्यों? क्योंकि जितने भी आइस कैप्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, वाटर लेवल सी का राइज कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये पानी मेल्ट होकर के कहाँ जाएगा, ये सी में ही जाएगा, रिवर्स में ही जाएगा. तो उसके वजह से सी का जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ रहा है. दिस में लीड टू फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरियाज नियर द सी इन द फ्यूचर. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि इस पानी बढ़ने के वजह से आपका पूरा लो लाइंग एरिया क्या हो जाए, सबमर्ज्ड हो जाए, फ्लड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है. द क्लाइमेट पैटर्न्स में ऑल्सो चेंज फॉर द वर्ड्स. ठीक है, जो क्लाइमेट पैटर्न है ये भी आपका चेंज हो सकता है. ठीक है, और चेंज हो ही रहा है. आप देखते हो कि गर्मियों का सीजन बढ़ गया है. द टाइम स्पैन और द summers they have become longer as compared to your winters. Okay, moving ahead with the checkpoints we have here. That is the first one, dash is the largest contributor to the greenhouse effect. तो अभी आपने पढ़ा होगा water vapor, याद है आपको? देखिए, water vapor is the largest contributor to the greenhouse effect. Okay, try this and we will be discussing this tomorrow. All right, already the time is about to be over. So I hope all of you would have got this chapter today. I'm sorry. Okay, so all of you would have got this chapter by today. What is greenhouse and what is global warming? Always remember both of them, they are very much correlated to each other. Okay, so in this way, tomorrow again we will be going ahead with this, continue this chapter, and we will be getting in more touch with your global warming. What are the effects and how we can protect our environment. Okay, so this was all for today. Thanks a lot for being with me and have a superb day ahead, and please don't forget to have a thorough reading of the chapter. Thank you and have a superb day ahead. Thanks a lot.